Good morning, dear children. Hope you all are safe at home. Yes? So, uh, I'm also fine, dear. So, today is uh, Wednesday, and today's slide is yes. So, a very warm welcome to all. So, thought of the day is your limitations. It's only your imaginations, right? Yes. So, date is 8th of July 2020. So, yesterday was obviously 7th of July, and tomorrow will be 9th of July. Yes. So, today's day is Wednesday. Today is what day? Wednesday. So yesterday was obviously it's Tuesday and tomorrow will be Thursday. Yes, so dear parents, this is the week 4 in day 2020th. Let's start our day with a small prayer. Come on, get up at your places and don't move here and there. Put your right hand on your left chest and repeat with me. You are within me. You are infinite. You are unique. My potential inside. You are the wings beneath my flight. You define me. My potential inside. Today I pledge with all my might, I shall achieve you, my potential inside. Thank you and get relaxed. Now settle down at your place. Yes. So now we are starting today's day is with logical time. Yes, we are started our day with the logical time. That's the maths time. आज क्या न्यू आया है हमसे मिलने? Now, as you all have already learned about number name, so get ready to learn few more number names. Yes, you already done 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, and till 20 you already did, right? Done. So now आज हम क्या सीखेंगे? So please find out the worksheet SR, that is senior KG, day 04, that is day 4, MTWS 01 and 02 worksheet, जिसमें 21 से लेकर 30 तक के नंबर नेम आपको मिलने वाले हैं और सीखने का तरीका पता है. सो डियर पेरेंट, देयर इज अ ट्रिक. हम बच्चों को ट्रिक से सिखाते हैं सारे नंबर नेम. एंड ट्रिक क्या है? ट्रिक है बच्चों को हम सिखाएंगे 0 से लेकर 10 तक का स्पेलिंग, राइट? 11 से लेकर 20 तक का स्पेलिंग. ये आपको बच्चों को लर्न कराने होंगे जो ऑलरेडी उन्होंने जूनियर केजी में करे हुए हैं. बस आप इसे एज अ साइड वर्ड रिवाइज कराते जाइए बच्चों को रोज, राइट? अब 21 से लेकर 99 तक के हम स्पेलिंग बच्चों को नहीं सिखाते, डायरेक्ट 100 सिखाएंगे. और 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 का स्पेलिंग सिखाएंगे. कैसे? 20 तक का स्पेलिंग बच्चे को आ गया, अब 20 के साथ वहां से 1 लेना है. 1 का स्पेलिंग ऑलरेडी बच्चे को आता है, सो दैट इज 21. 22 के स्पेलिंग के लिए 20 का ही स्पेलिंग लेंगे एंड 2 का स्पेलिंग लेंगे, राइट? दैट इज 22. सो 20 का स्पेलिंग आना मैंडेटरी है, 30 का आना जरूरी है, 40 का, 50 का, 60 का, 70. यानी बच्चों को नंबर नेम जब हम लर्न कराते हैं डियर पेरेंट, तो 1 से लेकर 20 तक बहुत मेहनत होती है. फिर 20 के बाद डायरेक्ट 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद 100 का स्पेलिंग सिखाते हैं. अब बाकी के नंबर नियम कैसे लिखेंगे बच्चे? लाइक 21, 22, उसके लिए ट्रिक होती है. 20 का 20 उठाना है आपको, जो आप बच्चे को सिखा चुके हो, एंड 1, 2, 3, 4 का 1, 2, 3, 4 ही लेना है टिल 9. कैसे? 21 का 20, 1 से 1, 21. जैसे 25 में अगर चले तो 20 का 20 लेना है, TWENTY, एंड FIVE 5 उसको 1 से लेकर 10 तक के स्पेलिंग में आता है. सो दैट इज 25. आई थिंक आपको क्लियर हो गया. सो दिस इज वेरी इजी टास्क फॉर द सीनियर केजी. बच्चों में इतना नॉलेज होता है कि दे कैन डू दिस. यस, सो दिस इज द वर्कशीट. एंड हाउ टू डू द वर्कशीट आपको करवानी कैसी है? सो राइट द वर्ड 21 ऑन द slate or paper and ask your child to write the correct number below it. Expected answer is 2121. Next, randomly write the name of any number between 22 to 30 on the slate or paper and ask your child to write the correct number below it. Ensure that you cover all the number between 21 between to 30 in this manner. Now give the worksheet SR, that is senior KG,
DG04MTWS01 and a pencil to your child and instruct his or her to write his or her name on the worksheet. Right? Once your child completed this worksheet, give him or her the second worksheet, that is SR D04MTWS02, and let them write their name on the worksheet too. Encourage your child to work independently and complete the worksheet. Help and guide if required. If not, don't interrupt with your child. Yes. Or if you don't have workbook with yourself, so don't worry. Note down the date in the left corner and in the maths notebook. Write the name, same formation in your maths notebook and do practice. Yes, this is the sample copy जो बच्चे की मैम ने सेट किया है. सो आपको ऐसे सेट करके देनी पड़ेगी कॉपीज. Now we are moving on the concept time. So there is a small transition activity. Come on, student, get up at your place and take 5 round at your place. Come on, do it. 1, 2, 3, 4, and 5. Sit down. Yes, so today's concept time, that is CT time, is what? Body parts are body parts. आप लोगों को कितने बॉडी पार्ट्स पता है? आई नो कि कितने बच्चों को क्या क्या पता है. लाइक आईज पता है सबको, नोज पता है, टीथ पता है, लिप्स पता है, लेग पता है, नीज मालूम होते हैं, माउथ मालूम होता है, ईयर मालूम होता है, हैंड एंड फिंगर्स मालूम होते हैं, एल्बो मालूम होती है, एंड टो मालूम होता है. यस, सो क्लिक ऑन द लिंक टू सी द वीडियो फर्स्ट. पहले आप लोग ये वीडियो अपने मम्मा पापा के संग एंजॉय करेंगे. देन what is the learning outcome? The child will able to understand the concept of the body parts and follow the instructions which is given by the teachers or parent. Now identify and name parts of a body. Yes, so lifelong learning है यहाँ पर. अगर आपको body parts नहीं पता होंगे, so this is not good for you. Now take out the worksheet number SR D03 CTWS01. This is a sheet जो आपको बच्चों की वर्कशीट में निकाल कर देनी है. नाउ टेल योर चाइल्ड दैट टुडे वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम. यस, अ गेम. आस्क योर चाइल्ड टू लिसन टू यू प्रॉपरली एंड अटेंटिवली एंड डू एज यू से. Yes, now attention is must. Say easy, touch your nose, touch your nose. Encourage him or her to touch his or her nose and say nose, nose, nose 3 times. Yes, continue the same and keep asking to your child to touch the different body parts like face, like neck, like shoulder, like hand, like back, like stomach, parts of faces like arms, elbow, palm, finger, nails, legs, knees, feet, toes, heel, hips, nails, waist and chest. Yes, this is a big task, dear parent. इनमें से कुछ चीजें बच्चों को अभी भी नहीं अगर नॉलेज है, then you have to clear about all the body parts like, I am repeating again, face, neck, shoulder, hands, finger, back, stomach, and parts of the face is what? Arms, parts of the face like eyes, nose, lips, right? Now, next, arms, elbow, palm, finger, nails, legs, knee, feet, toes, heels, hips, nails, waist, and chest. Yes, so to do the worksheet, after all the body parts are covered, play the rhyme. We are use our hand and eyes, ear, mouth, and nose to your child. That is very good rhyme. Yes, rhymes are available in Kidsy Learning app. You have lab? अगर आपके पास apps नहीं है, then please ask to Manju ma'am for the password and ID and please install it. If you don't have, you don't get the rhymes. Yes, then give worksheet SR D03 CT, that is concept time WS01, to your child and ensure that him or her to write his or her name on it, right?
Read aloud the instruction and if required, explain what is to be done. Assist the child if he or she finds it difficult to complete the worksheet, but don't complete it for him or her. Yes? Now moving on the next slide. Yes, this is the worksheet which you have given to your word. Give the worksheet SRD03CTWS01 to your child and instruct him or her to write their name on the worksheet. Read the instructions aloud and if you required, explain what has to be done by your child. Or if you don't have workbook at your home, please take out the printout. So this is the home assessment, that is SRCTD05 WSH01. ओके, सो पेरेंट यहाँ आपको बच्चे को ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी इन दिस वर्कशीट. यस, मैच द पिक्चर विद द वर्ड बाय रिटन राइटिंग द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स. Name and write the body part that help you to read aloud all the instructions and help your child to do the worksheet. Right? Now we are moving in the Hindi time. Before that, come on, get up again and do our activity with us. So this is a transition activity. Come on, jump at least 20 times. Come on, do it fast, fast, fast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Very good. Now just relaxed and sit down over there. Yes, settle down at your place. So in the Hindi, पिछली कक्षा में क वर्ग के अक्षरों का अभ्यास किया गया था. और क्या थे क वर्ग? पुनः अभ्यास करते हैं हम लोग. क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, ना खाली. ठीक है, अब हम सीखेंगे चा वर्ग. दैट इज द सेकेंड लाइन ऑफ व्यंजन. अब चा वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं. सो पहला अक्षर होता है चा से चम्मच. ठीक है, और चा को लिखने का तरीका आप लोग अपनी हिंदी पुस्तिका में देखेंगे. और पेरेंट प्लीज ड्रॉ इट फॉर द चाइल्ड. यस, चा वर्ग का दूसरा अक्षर देखेंगे. दैट इज छा से छतरी. यस, दैट इज छा से छतरी. प्लीज पेरेंट बच्चों के लिए ड्रॉ करके दीजिए, दैट वो जिससे वो ये काम कर पाए. यस, क्योंकि कोई भी वर्कशीट नहीं है हिंदी की हमारे पास. नाउ parent, this is the PD time, personality development. Before that, come on, get up at your place. Yes, again a transition activity is there. So fly like a bird, that I count, right? Fly like a bird. Okay, आपके both hand open होंगे and fly like a bird. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Now sit down at your place. In the personality development time, what is there? Today we are going to learn about how to be confident and become the superhero. Everybody want to be a superhero, yes? Yes, I know that. So session personality development and topic is I am superhero. Yes. So learning outcome is what? Parent इस activity के बाद हमें outcome क्या चाहिए? Now see it. Now the children will able to attempt to create drawings that are more detailed and realistic. Yes, speak independently and confidently at least one meaningful and logical sentence in front of an audience. Yes, that is the motive of this activity. So now video is there. You have to enjoy with your child. In this video, सुपरमैन एंड सुपर गर्ल के रूप में एक कार्टून मिलेगा आपको. दैट यू हैव टू क्रिएट. कोई वर्कशीट नहीं है उसकी वर्कबुक में. आपको अपने बच्चे के लिए खुद ड्रॉ करके देनी है. दैट कलर वो करेंगे उस पे. राइट नाउ योर चाइल्ड कैन इजीली स्पीक एट लीस्ट वन मीनिंगफुल सेंटेंस बाय देयर ओन विद इन द फ्रंट ऑफ व्हाट ऑडियंस. यस, राइट. Hope you all are clear with your work. What have to be done by you? Will you see in the next class? Stay home, stay safe, right? Brush twice in a day and hand wash so many times in a day with the use of soap, paper, right? And sanitize your hand. We will see you in the next class. Till then, bye.